The most colorful day, a Holi adventure. Chintu, Mira, come here, we have a surprise. Arun called out with a big, handsome smile. He was still in his blue suit from work, but his eyes were twinkling with excitement. Anamika leaned against him, her long hair flowing over her white t-shirt. Guess what day it is on March 4th? She asked. Chintu and Mira looked up, curious. It's Holi, they both shouted together. The next morning, the sun was bright. Chintu, wearing his favorite Spider-Man t-shirt and red cap, ran down to the parking area with Mira. We need to be ready, he said importantly. Mira, in her bright yellow top and skirt, helped him fill dozens of water balloons. They lined up bowls filled with red, green, and pink gulal powders on a stone ledge. Suddenly, the quiet parking area was filled with voices. "Happy Holi!" shouted Vivan, running toward Chintu. All their friends had arrived. Anya, Vivan, Ashima, Sunio, and Jian, along with their parents. The air was already starting to feel like a party. Vivan held a giant water gun, ready for action. "Attack!" Chintu yelled. The water balloon fight began. Mira and her friend Anya chased each other around a large potted plant. Anya laughed as she narrowly missed a splashing balloon. Mira held a yellow balloon high, her face glowing with joy as she prepared to toss it. After the water came the colors. Chintu grabbed a handful of bright pink gulal. He saw Ashima nearby and walked up to her. "Burana mano Holi hai," he cheered, which means, "Don't be offended, it's Holi." He gently rubbed the soft pink powder onto Ashima's cheeks. In the center of the parking lot, Vivan and Sunyo started a silly dance. They hopped from one foot to the other and spun around until they were dizzy. Everyone stopped their color throwing to watch them. "Look at them go," Sunyo yelled, making a funny face that made the whole crowd roar with laughter. Arun and Anamika stood near the entrance, watching the chaos with huge smiles. Arun had taken off his suit jacket, and his white shirt was now covered in streaks of purple and yellow. Anamika's white t-shirt looked like a painting. They held hands, happy to see their children making such wonderful memories. "Mira, look up," Chintu shouted. He and Mira each grabbed 2 massive handfuls of the brightest colors they could find, purple and orange. On the count of 3, they threw the powder as high as they could. A giant, magical cloud of color erupted over their heads, raining down on everyone. "Everyone, group photo!" Someone yelled. Even though they were a mess, everyone gathered together. Chintu stood next to Jian, both of them leaning into each other. They were so covered in colors that you could barely see their clothes, but their bright white teeth shone through their messy, happy faces. After the messy fun, it was time for games. The families spread out mats and sat down for a big game of tambola. Anamika took the lead, holding the bag of numbers. Mira sat close to her, watching her ticket very carefully with a yellow crayon in her hand. "House! I have a full house!" Chintu screamed, jumping up from the ground. He waved his ticket in the air like a flag. He had won the biggest prize. Arun walked over and gave him a giant hug, proud of his lucky son. "You're the Tambola king today, Chintu," Arun laughed. All that playing and winning made everyone very hungry. Suddenly, the delivery bikes arrived. "Pizza time," Anya shouted. Chintu and Anya sat on a bench, each holding a large, cheesy slice of Domino's pizza. They clinked their red cups of Coke together, feeling like the luckiest kids in the world. As the afternoon sun began to dip low, the excitement finally slowed down. Chintu and Mira found a quiet spot on the stairs. They leaned against each other, feeling the warmth of the day. They were very tired, but they didn't want the day to end. "Best Holi ever," Mira whispered. One by one, the cars began to leave. Arun walked Vivan to his family's car. "Thanks for coming, buddy," Arun said, shaking the boy's hand. Vivan grinned, his face a bright shade of blue. "See you at school, Chintu," Vivan called out as the car door closed. Inside their home,
Anamika helped Mira take off her colorful shoes. You see, Mira? Anamika said softly. Holi is about the colors, but it's also about love. It's the day we celebrate being together with the people we care about. Mira nodded, hugging her mother's arm. Chintu stood at the door, watching the last of his friends drive away. He adjusted his red cap, which was now more pink than red. He looked toward the reader and gave a final happy wave. Happy Holi, everyone. I hope your day is as colorful as mine was. खन्ना परिवार की रंगीली होली। खन्ना परिवार का घर आज बहुत खुशहाल था। सूरज की पहली किरण के साथ ही अरुण और अनामिका ने एक खास योजना बनाई। अरुण ने मुस्कुराते हुए अनामिका से कहा, आज हम बच्चों को बताएंगे कि 4 मार्च को क्या होने वाला है। अनामिका की लंबी जुल्फें चमक रही थीं और उनकी आंखों में उत्साह था। उन्होंने तय किया कि इस बार की होली सबसे यादगार होगी। जैसे ही चिंटू और मीरा को पता चला कि 4 मार्च को होली है, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। चिंटू अपनी पसंदीदा स्पाइडरमैन टी-शर्ट और लाल कैप पहनकर खुशी से उछल पड़ा। मीरा ने अपना पीला टॉप और स्कर्ट झटकते हुए कहा, भैया हम बहुत मजे करेंगे। दोनों बच्चे त्योहार की कल्पना करके नाचने लगे। होली का दिन आ गया। तैयारी के लिए सब पार्किंग एरिया में जमा हुए। अरुण ने पानी के पाइप संभाले और चिंटू ने अपनी लाल कैप को ठीक करते हुए रंग बिरंगे गुब्बारे भरने शुरू किए। पापा देखो मैंने कितने सारे गुब्बारे भर लिए, चिंटू गर्व से बोला। अरुण ने उसकी पीठ थपथपाई और दोनों ने मिलकर रंगों की बाल्टियां तैयार कीं। तभी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। अनामिका और मीरा प्रवेश द्वार पर खड़े होकर सबका स्वागत करने लगी। अनामिका ने अपनी लंबी चोटियों को पीछे किया और आने वाले हर दोस्त को तिलक लगाया। मीरा ने अपनी सहेली अन्या को देखते ही गले लगा लिया। चारों तरफ होली है का शोर गूंज उठा। मस्ती शुरू हो गई। चिंटू और उसका दोस्त विवान एक दूसरे के पीछे गुब्बारे लेकर दौड़ने लगे। चिंटू ने बड़ी चालाकी से विवान के गालों पर हरा गुलाल लगा दिया। विवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। हवा में गुलाबी, पीला और हरा रंग उड़ रहा था और हर चेहरा रंगों से सराबोर हो गया था। डांस का समय आया तो विवान और सुनियो ने मोर्चा संभाल लिया। संगीत की धुन पर दोनों ने ऐसे मज़ेदार डांस स्टेप्स किए कि सब लोटपोट हो गए। कभी वे हाथी की तरह झूमते तो कभी बंदर की तरह उछलते। उनके मज़ेदार डांस ने पूरी महफिल में जान डाल दी और अशिमा जियान भी तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद अरुण ने सबको इकट्ठा किया। अब तंबोला गेम की बारी थी। सब अपनी टिकटें लेकर बैठ गए। अरुण ने जोर से नंबर पुकारा, नंबर 7। चिंटू अपनी टिकट को ध्यान से देख रहा था। अचानक वो चिल्लाया, तंबोला। चिंटू ये गेम जीत गया और अरुण ने उसे गले लगाकर जीत की बधाई दी। खेल और मस्ती के बाद सबको बहुत भूख लगी थी। अनामिका और मीरा रसोई से गर्मा गर्म पिज्ज़ा के डिब्बे लेकर आईं। पिज़्ज़ा की खुशबू चारों तरफ फैल गई। अनामिका ने सबको पिज़्ज़ा परोसा और मीरा ने ठंडे शरबत के गिलास दिए। यह एक शानदार पिज़्ज़ा पार्टी थी जहां सब दोस्त एक साथ बैठकर खा रहे थे। पार्टी के आखिर में सबने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। चिंटू और मीरा बिल्कुल बीच में खड़े हुए। उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे क्योंकि उन पर लाल, नीला और हरा गुलाल लगा हुआ था। यह फोटो खन्ना परिवार के सबसे खुशनुमा पलों में से एक बन गई। बच्चों की आंखों में थकान कम और खुशी ज्यादा थी। सूरज ढलने लगा और सब अपने अपने घर जाने लगे। अरुण और अनामिका ने बच्चों को पास बिठाया और समझाया कि होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती का त्योहार है। चिंटू और मीरा ने वादा किया कि वे हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। खन्ना परिवार की ये होली खुशियों के रंगों से भरी रही।